Okay. So what we have done is we have created here some kind of a navigation like home. Those who have just joined, I'm telling for them that this is my navigation like home and add. Again, can click home, go back and click view user, come here and add new and log out. This is the hrefs we have done here. Okay, anchor tags so that we can have navigation. Then I need to have some kind of, the headers here, as it like in a table. It should come like a table on the top of which will be, like here should come the like a table like this. The table heading will be id, then name, then email maybe. Okay, and I want everything here. So all the user ids 1 2 3 4 5 whatever I have, and names and emails should come in the table itself. Okay, it should come in a table itself. So let us see to do that. Okay, sir Mushtaq, students are coming very late. That's not good. अभी और कौन आ गया? Participants. There's still a voice coming up, something like that. Anyways, so let us build that table now, which will have my, like I said, table, table, wherein I put up the headings, and rest of the data will be under the table also. Save it is equal to 80%. Okay. Like it at 80%, whatever. And I give some border to it, BORDR equals to 10 maybe. Let's give it a border 10. Single quotes, double quote, doesn't matter. So Control S. So we will get some kind of a table here. Okay. In the table, we will have some rows. The first row has to be, right? This is my first row. Okay. Wherein I may put up some color here, maybe BG color equals to, okay, no, not giving. So is equals to cyan maybe. I just want to get cyan color to this row. Control S. Okay, so inside this row I will build my IDs. Okay, I will build my IDs. Now I will have an ID. One is what's I'm sorry, not IDs, columns. So first column will be the ID. Okay, maybe I put up the bold tag, and then I say I want this as an ID here. Okay, this is my first thing which will be shown up, and that is going to be my first row. And Control D, duplicate it. Then second thing is I'm gonna have 4 things. Okay, maybe I'm gonna have 4. I will tell you what. Maybe I have. I will keep it 1, 2, 3, 4. Okay, and update. Maybe 4 things. Yeah, I will tell you why. Why 4? Email. Then I'm gonna have some name. I'm gonna have email, password. I'm not gonna show it here. Passwords not to be shown. Okay, and I got here one more thing called update, which will update me the things. This is coming up: ID, name, email, update. In update, I will have kind of, either I want to delete this user, or I want to do what? I want to update this user, particular user, from same. I will do it in the same this view tab, or I could have a separate delete or separate update form, but I just want to do it here because view is here. There will be ID1, name, this I want to change email or name or whatever, so I can do it from here. So this is the first row of the table. Now the second row of the table has to fetch data. Now what should be here? What should be on the second row of this table? This is the first row of a table, which starts from here. Row, this is a table tag from here to here. As you could see, this is a table tag. It ends here. And this is the first row. TR tag means rows. Okay. And then TD will give the columns. Column number 1, ID. Column number 2, name. Column 3, email. And update. As you could see, column number 3, update is here. So this is the last, this one. Okay. But what I want to do is now is the next row, which is going to be here, TR. Okay. The next row has to fetch data from the database, which is going to be on the bottom of it, which has to fetch data.
which has to tell us like one Junaid email and update में क्या करना चाहते हो आप, वो सारी चीजें अपडेट के बगैर जो यहाँ सारी चीजें ये हैं, ये कहाँ से आएंगी? They will come from the database. So we need the second row of this table has to fetch data from the database, and that too in a while loop, so that we can fetch all the data and show it here. And that whatever we will show that will be the part of this table. That will be the part of this table, right? So that will be the, I don't know why it's not writing properly. My pen is going here and there. I don't know why. Okay. So that will be the part of this table, those things, but whatever I will fetch. So I have to fetch the data from the database to get things here, right? So what should I do to do that? What should I do to do that is, first I will have a PHP. My PHP tag will be here. Okay, PHP. This is my PHP wherein I want to connect with the database. So maybe I will first do the session underscore start, not in a caps, cap lock is open. Session underscore start. Okay. Class ko khatam now. Sohail is coming right now. So session start. Now first thing I will do is include. I just want to include what I will include, because I want a connection to the database, and the connection detail is in my connection.php, which is there in a connection.php. I have the things in this connection.php. The things are there. Okay. Now I'm gonna fetch data from database. For that, I need a query. Okay. Fetch data from database query. So what query I have, I will put that in a variable query, query. I'm not fetching, I'm just putting it in a variable $query, which will fetch things from my database. So if I want to fetch everything from the database, what's going to be the query? Query is going to be the select asterisk from users. I'm just removing the wire class from table name. Users, that should be the small letters. So select asterisk from users means select everything from users. Okay, wire class अब हटा दो तो सारा आपको मिल जाएगा. And then I will put that in a result set, $result set. I got a result set which will be having all those things which come up from the database. So I have to talk with the database. How I talk with the database in PHP? I say MySQLi underscore query. ठीक है ना? हाँ. Okay. $db is the connection, first thing which I will, and then second is the $query. Right? So this is how we talk with the database. We have done it already. MySQLi query, and I want to query which database, which connection, whatever that is in DB knows everything about that, and the query knows what I want to talk to. I want to talk that give me everything from the users. This is what query says here on the line number 5. And whatever is there, that will be stored in a result set, will come in the, and a $result will point to that, and I can say or die, or we got to die, because there is, if something wrong happened, something wrong happened, and it will kill the query. Okay, it will kill the query, right? After doing that, it's going to kill the query, and that's it. This is what I will get it from here. Okay, then rest of the, because I will by this, what will happen, this is same as what we had done earlier. By this will also give the revision, and you will understand what we were doing also. It will cement the concept that this will get a result set, means everything on the table will come up in a result set, will have everything in it. Now I want to get it row by row. I want to get each row and paste it in the table. Okay, I want to get each row as an array. Okay, as an associative array, I will get things. I told you I have the
What we used last time for getting the associative array? Can anyone tell me? MySQLi fetch assoc. Okay, we have two. Either we use that, we can use also MySQLi underscore fetch underscore array. So I'm showing you the both. Okay, this is what we have. बट लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि वो जो मैं यहाँ पे जो रो लाऊंगा वो मुझे यहां नहीं लाना है, वो मुझे इस टेबल के पास लाना है। जो ये टेबल है इसी का जो नेक्स्ट रो मेरे पास होगा, दिस विल बी माय नेक्स्ट रो, दिस इज माय नेक्स्ट रो। ओके, और यहां पे मुझे वो होना चाहिए, द सेकंड रो इट शुड कम हियर। ठीक है ना, जो भी मैं लाऊंगा वो दैट हैज टू बी इन द नेक्स्ट रो हियर। दिस इज माय गोना बी माय नेक्स्ट रो। ठीक है कि नहीं है? समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? सो बट बिफोर आई शो दिस रो, से फॉर एग्जांपल आई वांट टू पुट दैट इन माय रो, ओके, I have to start the PHP because this is to be written in a PHP tag. So I will start PHP anywhere. You can start PHP anywhere you like, okay? And then in the PHP, I'm saying, for example, while I'm using a while loop, I can't use that in a HTML, okay? And I will get the things into the dollar row, what we had done last time, equals to MySQLi underscore fetch underscore array. Okay, and I will feed it the result set dollar result because result has everything. Okay, I think I need to do this, and after a while I need this thing. Okay, let me this one has to be after this because while has to accommodate everything. while का ये बाकी है, मैं देखूंगा मैं इसका कहाँ लगाऊंगा ये while का। ठीक है, यहां पे मैं जो while के अंदर करने जा रहा हूं, now I have to use the tables rows, but I'm in a PHP code. Look at it. I'm inside the while here. What will happen here is कि result set ने यहां से सारा डेटा लाया, जितना भी यूजर्स होंगे वो सब के सब इस रिजल्ट सेट में आ जाएंगे, और यहां से एक एक करके मुझे लाना है, एक एक रो लाना है उसमें से, और यहां पे चिपकाना है। और यहां पे कैसे चिपकाना है? एज ए रो ऑफ दिस ऑलरेडी बुल्ड टेबल, जो मैंने टेबल यहाँ पे बुल्ड किया हुआ है, इसका जो नेक्स्ट रो है वो यहाँ पे चिपकाना है। तो मैंने रो लाया यहाँ से PHP करके, मैंने वाइल रो में लाया कि एक ये एक लाएगा। सो मैं इसको वाइल कह रहा हूँ, वाइल डॉलर रो इज MySQL fetch array result, ये लाएगा एक रो, while true हो जाएगा and it will return true and it will do the things, then next it will again fetch next row, it will again fetch next row, जब तक कि एंड नहीं होगा। जब एंड आएगा तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा और while से बाहर निकलेगा। तो तब तक हम इसमें रो चिपकाएंगे। इसलिए मैं ये जो नेक्स्ट रो है यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि ये while रो के अंदर नहीं लिख रहा हूँ, रो while के अंदर लिख रहा हूँ। जिस रो जो मेरा है ये मैं while के अंदर लिख रहा हूँ, क्योंकि एक रो लाएगा, ये while लूप लाएगा एक रो इस रो में, तो ये जो टेबल का रो है उसमें वो चिपकाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाएगा फिर चिपकाएंगे, फिर नेक्स्ट लाएगा फिर चिपकाएंगे एंड सो ऑन। ठीक है जी, अगर समझ नहीं आ रहा मुझे बताएं प्लीज। ऑडियो नहीं आ रही है? किसको ऑडियो नहीं आ रही है? आई थिंक ऑडियो शुड बी क्लियर। इज माय ऑडियो क्लियर और नॉट? Is my audio clear? Because somebody is saying audio नहीं आ रही है. Faisal Babri is saying us audio नहीं आ रही है. It's clear. यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, मैं बिल्कुल एक एक स्टेप आपको बता रहा हूँ, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर सिंगल आयोटा ऑफ कंफ्यूजन इज देयर, जस्ट स्टॉप मी, आई विल रिपीट दैट, क्योंकि बाद में पूरा लेक्चर में रिपीट नहीं कर सकता। ठीक है, सो और प्लस में दे ही रहा हूँ आपको वहां से भी ये जो है, सो यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर ऑल्सो। सो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि अब मुझे वाइल लूप से एक एक रो आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल वहां रिजल्ट सेट जो हमारा यहाँ पे आया, ये जो रिजल्ट आया उसने सारी क्वेरी उठा के, तो उसमें सारा डेटा आ गया। ठीक है, ऑल डेटा इज देयर, आराम से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, होल डेटा विल बी देयर। Okay, all data will be there. Now from this I will fetch only one row as an array, and that will be done by this guy.
MySQLi fetch array. So this will fetch one row. So जब इन्हें fetch वो row किया ना, वो मुझे चिपकाना है इस ये मेरा tr tag means column, जो इसका सॉरी tr means row, जो इस टेबल का रो है नेक्स्ट रो, उसमें वो मैं चिपकाऊंगा जो भी वहां से आया, ठीक है। और वाइल लूप फिर से चलेगी, वाइल लूप छोड़ेगी नहीं जब तक कि क्या नहीं होगा कि यहाँ पे रो एम्प्टी आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। सो दूसरा रो अब वो रो के पास है एज एन एरे, फिर वहां से जो रो मेरा होगा, रो विल बी लाइक दिस which have the ID, which have the name, which have the email, which have also the password, and अंदर होगा say one Junaid, email is junior@live.in, and whatever that is. Now I will fetch from this array, and I will fetch from this array and paste it in the tr. ये शेख अब आया कि इसको ये इसका लॉग आउट हो गया था, क्लास खत्म है, अब आ रहा है। Anyways, what I'm saying is कि अब यहां से उठा के ये इस रो में हमें प्रिंट करना है जो टीआर मैंने टैग लिखा वाइल लूप के अंदर, फिर से वाइल लूप में जाएगा, नेक्स्ट रो लाएगा और टीआर इसको प्रिंट कराएगा नेक्स्ट एज ए नेक्स्ट रो, ठीक है। फिर से लूप जाएगा वाइल लूप जब तक कि एंड नहीं होगा, तो फिर से टीआर इसका नेक्स्ट टीआर खड़ा हो जाएगा। एंड सो आई एम पुटिंग दिस टीआर इन अ लूप, सो दैट मींस विद ईच आइटरेशन ऑफ अ लूप one tr tag means one row will be created in this table till we are done with all the rows. जब while loop के बाहर निकलेगा and we are done. Hopefully you are getting it. If you are not getting it, don't worry, you can watch later on the video and just see it 1-2 times and try to do it. जब आप कोड लिखना शुरू करेंगे then you will understand properly. ठीक है जी, we have got 6 minutes left but we will complete this today. जो व्यू का मसला है, हमें जो है ना क्रिएट डिलीट ऐड करना था। आई कुड हैव डन इट इन वन वीडियो ओनली, वन वीडियो में मैं क्रिएट डिलीट की क्वेरी दिखा था, बिकॉज़ जस्ट वन क्वेरी, ओके, दिस वाज वन वीडियो वाज सफिशिएंट फॉर इट, बट आई एम गिविंग सम काइंड ऑफ लिटिल एप्लीकेशन ऑफ इट, कि मतलब व्यू करेंगे डेटाबेस, हम ये करेंगे वो करेंगे, लाइक दैट। अदरवाइज दिस योर टॉपिक इज जस्ट वन लेक्चर टॉपिक ऑफ दिस 4th यूनिट, ठीक है। इसलिए आप खुद मेहरबानी करके इसको फिर कोड करेंगे और फिर करेंगे आप, ठीक है। तो अब मसला है कि ये जो मैं टीआर टैग लिख रहा हूं यहाँ पे, डेफिनेटली मुझे टीआर लिखना है, लेकिन यहाँ तो पीएचपी के अंदर हूं मैं, दिस इज द पीएचपी, और पीएचपी का एंड कहाँ पे होगा, पीएचपी का एंड भी कहीं पे लिखना है मैं, दैट विल बी हियर, वरना एरर आ जाएगा बाद में। दिस इज द पीएचपी एंड। अब मैं पीएचपी के अंदर हूं तो मैं ऐसे एचटीएमएल नहीं लिख सकता, सो दैट मीन्स आई हैव टू गेट दिस इन द इको टैग in so that I will get somewhere the double quotes, और double quotes में मुझे ये tr रखना पड़ेगा कहीं पर, ठीक है ना, like this. So maybe I put up in a tr cat, I change its attribute like bg color equals to gray में लिखता हूँ मैं, चलो मैं gray रखता हूँ इसका bg color इस tr tag का, ठीक है, that's end. And I think I also have to get the tr closed somewhere. Okay, this has to be in an echo as well. I can't put it like that. Okay, because I'm in a PHP, I can't put up the HTML like this, because यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से तो मेरा ये सारा ये HTML आ रहा था जो मैंने टेबल बनाया, इसमें सीधे HTML लिखूंगा मैं, लेकिन यहाँ से मैं PHP के अंदर हूँ तो वहां पे HTML ऐसे नहीं लिखेंगे, डबल कोट्स में कहीं पे लिखेंगे, ठीक है। सो इको टैग मुझे मिलेगा तो उसमें tr tag आ जाएगा, कंट्रोल S। Okay, there is some problem, line number 40. What is that? Line number 40. Number 40 यहाँ पे है, तो उधर क्या प्रॉब्लम है इसको? अच्छा, इसका टर्मिनेटर नहीं है, कंट्रोल S। I don't know, there is some issue here coming up. It's the unexpected end of file in whatever line 40. एक मिनट, यहाँ से मैंने कहा PHP शुरू किया मैंने, अब वाइल लिखा हूं मैं, इसका हाँ इसका ये नहीं है ना, ब्रेस हमारा नहीं है, सो वाइल का ब्रेस भी हमारे इसके बाद ही खत्म होगा ना, दैट वाज द प्रॉब्लम। ओके, अभी कुछ और भी मसले हैं वो देखेंगे। मैंने क्या किया, वाइल लूप में क्या है, माई, अच्छा my, ये वाई बोल गया हूं मैं, ठीक है, ये भी एक एरर था, अभी भी कुछ और है। फिर स्टार्ट इंक्लूड कनेक्शन फेच डेटा फ्रॉम डेटाबेस, अच्छा ये तो जो ऊपर लिखा मैंने, ये यहाँ पे ये मसला है, क्योंकि ये इसका HTML दिखा रहा है ना,
कंट्रोल एस, ये PHP नहीं था, ठीक है ना, ठीक है, ये मसला था हमारा। तो जहां पे मैंने अब ये शुरू कर दिया ये टेबल, उसके पहले मैं थोड़े से BR टैग्स एक दो लगाऊंगा ताकि वो नीचे आ जाए, ठीक है। BR टैग्स प्री करना चाहिए था, कंट्रोल एस, तो नीचे आ गया। I should have done the pre also maybe so that it will give a better way to do things. Anyways, अभी नीचे आ गया थोड़ा सा। ओके, वो PHP में यहाँ पे नहीं लिखा था ना ये क्वेश्चन मार्क, तो इसे ये PHP नहीं ले रहा था, मैंने तो ऐसे लिखा था, पता नहीं कहाँ से आ गया। एनीवेज, अब यहाँ पे देखिए, हम मैं क्या कर रहा हूँ कि वाइल लूप लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ से हम ला रहे हैं एक एक करके रो, और अब मैंने TR टैग लगा दिया, ये मेरा TR है। अब मुझे इसको पटकना पड़ा इको के अंदर बिकॉज में PHP के अंदर, वरना वही TR है। अब यहाँ पे TR के अंदर मैं क्या बनाऊंगा, कॉलम्स। सो कॉलम्स विल बी अगेन, TD में कॉलम है मेरा TD, सो TR के अंदर मैं TD लगाऊंगा ऐसे, ठीक है ना। लेकिन मसला ये है कि जो मेरा ये TD होगा, it can't be like this because this I am in a PHP, so I have to use the echo. So echo में मैं डबल कोट्स के अंदर इसको TD को लगाऊंगा ताकि, नहीं यार ये क्यों नहीं आ रहा है इसमें, इसमें आ गया ऐसे, ये TD आ गया मेरा इसमें, और फिर मैं कंकैटिनेट करूंगा इको के अंदर। सो डॉलर, क्योंकि मेरा वो किसके पास है, पहला जो मुझे आईडी दिखाना है वो रो के पास है, बिकॉज रो वेरिएबल हैज दोज ऑल थिंग्स, लेकिन रो एक एरे है, उसका एसोसिएटिव एरे है, उसके अंदर आईडी होगा, तो वो मुझे प्रिंट करना है, ठीक है ना। और इसको मैं डॉट करूंगा, कंकैटिनेट करूंगा, बिकॉज मेरा TD भी क्लोज करना है। सो आई हैव टू क्लोज TD, ओके, दैट हैज टू बी इन डबल कोट्स, राइट। I have to close this TD, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट है, पहले मैं इसको सेव करता हूँ, मैं देखो कोई एरर वेरर तो नहीं है। इसको टर्मिनेट करते हैं, कंट्रोल S। अब देखें आप, यहाँ पे आईडी आ गया, कुछ गड़बड़ किया हमने है, डेफिनेटली हमने कुछ गड़बड़ किया, लिख देखते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे आईडी दिखना चाहिए था ना। मैं कह रहा हूँ कि इको मैंने किया, फिर मैंने कहा कि भाई डबल कोट्स में TR टैग, ओके, TR BG कलर, BGCOLOR, ठीक है, इक्वल्स टू ग्रे, एक इसमें सिंगल कोट्स मिस है यहाँ पे, ठीक है ना, कंट्रोल S। देखें, इसने सारे आईडीज लाए, जितने भी मेरे पास आईडीज होंगे ना, वो सारे के सारे, अगर होम आप यहाँ पे जाएंगे, हमारे पास 5 बंदे हैं, 1 2 3 4 5, ओके, सबके आईडी आ गए, क्योंकि मैं वाइल लूप में फिर सिर्फ एक ही, फिलहाल TR में सिर्फ एक ही कॉलम बना रहा हूं, वो है मेरा आईडी, रो ऑफ आईडी, इसने फेच करके लाया। इसी को अगर मैं करूंगा कंट्रोल D, सेव करूंगा, मैं कहूंगा नेक्स्ट कॉलम बना, TD मींस नेक्स्ट कॉलम, ये मेरा TR है, मैं इसको थोड़ा टैब दूंगा क्योंकि ये इसके अंदर है। दिस इज द रो विच स्टार्ट्स फ्रॉम हियर टू हियर। अब इको में क्यों लिख रहा हूं मैं TR, बिकॉज मेरा